महिला को मिला अधिकार हो, फिर भी महिला न जाने महिला बनी है डीएम, महिला बनी सीएम। Agriculture has the power to eradicate poverty and cultivate growth, but in some countries, progress has been slow. Advancement has been hindered because women have not been supported in the important role they play in agriculture. They are hindered by their lack of resources and the gender power dynamics of the societies in which they live. This affects their productivity and their ability to contribute to lifting themselves and their families out of the vicious cycle of poverty. In every developing nation, women make significant contributions to the rural and agricultural economies. In many parts of the world, where economic and social forces are transforming the agricultural sector, their roles vary significantly between regions and within regions. Their roles are also rapidly changing. Rural women often manage complex households and pursue multiple livelihood strategies. Producing agricultural crops, caring for animals, doing household chores, earning a living in agricultural or other rural businesses, collecting fuel and water, participating in trade and marketing, and taking care of family are typical activities. Although many of these activities are crucial to the well-being of rural households, they are not counted as economically active employment in national accounts. Another reason why agriculture is underperforming in many countries is because of the adverse effects of climate change. Climate change is having far-reaching impacts on many facets of human life. But its biggest impact is on agriculture. Some countries are particularly vulnerable geographically. Areas such as Kenya and Zambia in Africa and Uttar Pradesh in India have been fighting the effects of climate-induced droughts and floods, conditions which have progressively worsened over recent years. Unpredictable rains, dwindling water resources, and events such as flash floods and cyclones mean that households frequently fail to meet their food and income needs. And that has significant immediate and long-term effects on children, their health, protection, education, and future opportunities. With the shift in the rain calendar and longer dry periods, many farmers are producing fewer crops with smaller harvests. In other places, the rain failed to come at all. Crops cannot be planted and livestock perishes, dragging many families further into poverty. With the background that we have in Mumbai, we have a lot of potential where there's a lot of farming land and a lot of farming activities, and people know how to grow their crops. But one of the things that you realize is that malnutrition and stunting are part of these livelihoods, these households. So this project came in to support our efforts as Ministry of Health to improve nutrition. As a response to this, civil society organizations, CSOs, have been standing up to support women involved in rural agriculture. With assistance from Child Fund and their Swedish counterpart Barnfonden, and with funding from the European Union and Forum Civ in Sweden, civil society organizations and the women they support have been able to come together to learn from one another. They have been supported with new knowledge on how to deal with the effects of climate change and with systems and structures, so they can enjoy improvements in their lives and their livelihoods. The reason why we chose moringa in Emali is because, one, it's drought tolerant and can survive the climate of this area compared to other crops. The second reason is because moringa has a high economic value. Its products are widely sought after for its medicinal and
nutritive value that it brings to the farmers. And lastly, because of the nutrition, particularly for children, it has macronutrients such as zinc, calcium, and even magnesium, which are very important to the growth and well-being of children. So those are the major reasons why we chose moringa. महिला खेतों में काम करती थी, लेकिन वो अपने आप को किसान नहीं मानती थी और खेती का जो एक टेक्निकल पारूद था जिससे कम लागत में ज़्यादा उपज वाली खेती कैसे की जाती है उसके बारे में महिलाओं को नहीं पता था और महिलाएं उस चीज़ों को नहीं करती थी। और फिर जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम के तहत महिला किसान समूह बनाए और उस समूह में जब हम लोगों ने उनके साथ ट्रेनिंग करी और उनके साथ बातचीत करी और एक्सपोजर किया तो महिलाओं के अंदर जो सीख थी वो सीख बढ़ी और उन्होंने अपने अंदर व्यवहार चेंज जो हम लोग बोलते हैं कि उस व्यवहार को अपनाने की कोशिश करी और उस व्यवहार को अपनाते हुए उन्होंने खुद इस चीज़ों को देखा और उनके परिवार में जो पुरुष थे, जो हम लोग कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे पुरुष जो कहता है वो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों को उन्होंने तोड़ा कि अपने घर में ज़बरदस्ती लड़ाइयाँ करके श्री विधि से धान लगाना, लाइनिंग सोनिंग करके गेहूं की बुआई करना और उस चीज़ों में जब पैदावार ज़्यादा हुई और बीज कम लगे तो उस चीज़ों को उनके घर के जो पुरुष थे उन लोगों ने भी इस चीज़ों को माना और उन लोगों ने उनका साथ दिया और वो आज टेक्निकल खेती की तरफ आगे बढ़ रही है जो ये दिखा रहा है कम लागत में ज़्यादा उपज वाली खेती हम कैसे कर सकते हैं। The program focuses on promoting women's economic empowerment and social rights and enhancing women's voice, leadership and participation in all aspects of their life where their gender has formerly been seen as a barrier. Aside from empowering women farmers, the program also focuses on enhancing women's participation in the climate change agenda and giving them access to information on climate-smart agriculture and how to adapt their agricultural practices. आधुनिक तकनीक से जो बताया गया है उसके विधि से खेती करने से उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और जैसे पहले था कि जो है एक खेत में एक ही सब्जी लगा दी जाती थी और वो चलता रहता था। अब है कि एक उसी खेत में हम लोग जो है नीचे प्याज भी लगा देते हैं, ऊपर लौकी लगा देते हैं, फिर उसके बाद सूरन लगा देते हैं। तो इस तरह कई खेती से मतलब प्रॉफिट होने लगा है। चाइल्ड फंड से हमें मुर्गी मिली है, 25 टी मुर्गी मिली है, मछली मिला है, मछली बच्चा मिला है के और जो है के 3 ठी बकरी मिली हैं। तो हम ये कुल मने करते रहे हैं। फिर ओकरे बाद मान ला हम मछली बेचे हैं तो उससे जो है कि एक बकरी और ख़रीदे है। फिर मान ला बकरी बड़ी होगी तो का बेचे तो फिर और मुर्गी ले है, 25 मुर्गी मिली रही तो और मुर्गी ले है। ऐसे ऐसे हम अपन मने रोजगार बढ़ावत है। Women were trained in goat management, of which they were trained on how to vaccinate and how they can make goat layering as a profitable business. We supported women with startup capital, which we gave them goats. These goats were meant to support them in terms of their livelihood, in terms of supporting their children in education, health and nutrition. Some of them, they are involved in gardening. So from the same goat they get manure to put in their garden, and also they use the same goats for meat and also milk. So in terms of nutrition, these people, they've benefited a lot and we've seen improvement. Armed with proper knowledge and supporting each other collectively through women's farmer groups supported by strengthened local civil society organizations, they are better equipped to cope with the effects of climate change. हमारी कंपनी में जो है 60 महिला किसान समूह बना के 15 ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने रोजगार शुरू किया। इस समय समूह की महिलाएं हैं बना रही बासमती चावल, गोपाल भोग चावल, संभा चावल, ये 3 चावलों की वैरायटी बना रही हैं और गुड़ की बर्फ़ी बना रही हैं, हल्दी पाउडर बना रही हैं, झाड़ू बना रही हैं, वर्मी कंपोस्ट का खाद बना रही हैं और जैविक खेती की तरफ बढ़ रही हैं। रासायनिक खाद को हम लोग जो है धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो महिलाएं जो छोटा छोटा रोजगार जो अपना शुरू की हैं, इससे वो आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रही हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में उनको सहयोग मिल रहा है। बच्चों को अपनी पढ़ाई में चाहे किसी भी चीज़ में सहयोग भी कर रही हैं।
At the beginning of the value chain, we have production, where Child Fund worked with the women group to support them in terms of training how to maximize production of moringa through the farmers themselves. Then the next stage would be upon increased production, Child Fund supported these women that were producing moringa to establish a processing plant where they produce products such as moringa powder, moringa oil, and even the byproducts to make feed and body scrubs. And to ensure that they have a good market opportunities, these women were organized into a cooperative society called Emuka Moringa Cooperative Society. And through this cooperative that has over 70% female membership, they have been able to be organized to sell their products as a unit, which enables them to fetch better prices for their products in the market, and also just link them to financial institutions that they can be able to grow themselves beyond the support that Child Fund gives to the women. My situation in the beginning before I joined Child Fund was so bad. My children were so vulnerable. There are a lot of challenges. I could not even source any monies from anywhere else. But through this village banking that have been introduced, that I joined through Child Fund, I'm able to get some funding. I was able to get a loan from the same village banking, started a small business of which I was making scones and fritters, selling in the nearby school, in the nearby community. After selling all my profits that I realized from my sales of the scones and fritters, I could bring it to the savings to save, which I'm able to support my family at large. इस प्रोग्राम से दीदी हमें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हम अपनी सब्जी की खेती करने लगे लाइन विधि से, और अब जब हम जैविक खाद डालते हैं तो हमारी पैदावार ज़्यादा होने लगी। जब हमारी पैदावार ज़्यादा होने लगी तो हम अपनी सब्जी जो है मार्केट में देते हैं, और घर से भी व्यापारी आते हैं ले जाते हैं, घर से चली जाती है, और मार्केट में हमारा पूरा परिवार सहयोग करता है और मार्केट में भी बेचा जाती है, और कम लागत में अच्छा पैसा मिलता है। और जो हमारे बच्चे हैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ड्रेस फीस सब चीज़ की पैसा मिल जा रहा है अच्छे बढ़िया से, कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग इस परियोजना के साथ जुड़ करके 1500 किसानों को 60 WFG के माध्यम से जोड़ पाए हैं। इनके साथ हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया उसमें कई तरह के, एक तो सोशल इशू पे काम हुआ, दूसरा जो है बिजनेस इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हो सके इन महिला किसानों का, इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उसमें जो है 60 वुमेन फार्मर्स एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक FPO का गठन भी हुआ। ख़ास तौर से अभी जो हम लोगों के उद्यम के रूप में हुआ है कि इनपुट सेंटर है, जो खाद बीज दवा का दुकान है उनका, और पूरा का पूरा जो भी शेयर धारक हैं वो लोग वहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं कम रेट में, वाजिब रेट में, और फिर गुणवत्ता पूर्वक जो है सामान मिल पाते हैं। वहीं पर देखें हम तो बिजनेस इंस्टीट्यूशन स्थापित करके उनके जो उत्पाद थे, कृषि उत्पाद थे, उसको एक बेहतर दाम दिलाने का भी प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या महिलाओं का जो एक किसान के रूप में पहचान का स्थिति है वो नहीं था। सारा काम महिलाएं ही करती हैं, लेकिन महिलाओं की किसान के रूप में पहचान नहीं होती है। लेकिन यह जो बार्नफोंडेन और चाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग से जो एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया वुमेन एम्पावरमेंट का, इसमें महिलाओं को किसान की पहचान मिली है। महिलाएं नई तकनीक का प्रयोग कर रही हैं, चाहे वो सुपर सीडर की बात करें, चाहे सिंचाई में नई तकनीकों का प्रयोग करना कहें, चाहे बुआई में नई तकनीकों का प्रयोग करना कहें, या वो अपने घर में जैविक खाद बनाने का भी काम अब शुरू कर दी हैं। तो मुझे लग रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है संस्था के द्वारा। महिला किसान जो है उत्साहित भी हैं, महिला किसान के परिवार के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, वो जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और जलवायु के अनुकूल जो खेती किसानी है उसको करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। We have seen the reductions in malnutrition, and then also we've seen a reduction in the real cases that are also related to malnutrition. The other things that we have seen is that there is an increased support of men, towards wives that are pregnant. We know that in that period, a woman needs a lot of emotional support as well as nutritional support. To increase access to water, a total of 96 boreholes were rehabilitated, with 22,000 people benefiting from this in the area of improved nutrition among children under 5.
A total of 5,910 households were reached in 4 wards of Mumba district. आज हमारे गांव की महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि ये महिलाएं ग्राम सभा की बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, उतनी तादाद में पुरुष नहीं रहता जितनी तादाद में हमारी महिलाएं जाती हैं वहाँ। और ये महिलाएं जाती ही नहीं, अपने अधिकारों को भी जानती हैं और अपने अधिकारों को लेकर के काम भी कर रही हैं। जैसे मनरेगा का काम हुआ और वृद्धा पेंशन, तमाम योजनाएं, जो भी योजनाएं आती हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ये खुशहाल हैं। आज हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि कम से कम 2 बीघा तो भाटा लगा है, पलकी लगी है और टमाटर लगे हैं। ये महिलाओं का देन है। ये महिलाएं, इसके पहले पुरुष रहते थे, करते थे, लेकिन जब से ये किसानी में जुड़े, जब तक इन लोगों का इनका उल्लास दुगना हो गया है। प्रोग्राम में जुड़ने के पहले हम घर से बाहर नहीं निकलते थे और हम मुस्लिम परिवार से हैं तो पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा ही थी। घर से बाहर निकलने में रोक टोक बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और उद्यम की ओर बढ़े हैं, संगठन बना, भेदभाव के बारे में, महिला पुरुष समानता के बारे में जानकारी हुई और अपने हक और हकूक़ के बारे में जानकारी हुई। ये सब चीज़ के बारे में इस प्रोग्राम में जुड़ने से बहुत अच्छी जानकारी हुई और हम घर से बाहर निकल के कुछ उद्यम करने के लिए सोच रहे हैं। पहले हमको हमारे गांव के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमको कहते थे हमारे पति के नाम से उनकी औरत, हमारे बच्चों का नाम लेकर कहते थे कि संतोष की मम्मी। इस प्रोग्राम में आने से हमको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की मिली कि हमको हमारे नाम से सारे लोग जानने लगे। अब हमको हमारे नाम से बुलाते हैं, हम महिला किसान विजय लक्ष्मी के नाम से बुलाते हैं। The project has impacted the lives of 15,000 female farmers in India. 10 CSOs are working on this project. The women have recognized their capacity to own and manage their own cooperatives. Linking women farmers in India with the farmers in Kenya and Zambia generates solidarity as well as new ideas and understandings of how women can support each other and contribute to improving their lives and livelihoods. Every day, more and more women are linking hands to improve their conditions by forming and joining cooperatives and women's groups. From behind the veils of society to the forefront of leadership and empowerment. This is the story of women farmers and leaders in Kenya, Zambia, and India.